Hello, good morning one and all. Welcome back to physics class. Today we are going to start new topic, new lesson, that is chapter number 7, thermal properties of matter, lecture 1. In the previous lesson we have discussed about the mechanical properties of matter, right? Elasticity, right? Rigidity, shape and size, Young modulus, right? Hardness, toughness and straightness of also of the matter. But in this chapter we are going to talk about only the heat, that is thermal. Thermal, the meaning of thermal means to supply the amount of heat to the substance, and because of heat what happens exactly, that we are going to study the effects. Okay, so what is the actually temperature, right? तो टेम्परेचर क्या है, हम लोग जनरली यूज करते हैं टेम्परेचर. वी टॉक रेगुलरली, अभी विंटर चल रहा है, हम बोलते हैं अरे आज ठंडी बहुत है, राइट? तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वाई वी फील कोल्ड टुडे? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. एंड अगर सराउंडिंग टेम्परेचर अगर कम है तो हमको ठंड लगती है, राइट? वी फील cold because the heat flow from our body to the surrounding, right? So that is what the temperature. So temperature generally degree of hotness, degree of hotness मतलब feeling hot or coldness. But this is not enough definition or meaning of temperature. We will study the temperature in proper way, right? Before that we will have the heat. What is heat? Heat is the form of energy like light energy, sound energy, right? Nuclear energy, chemical energy, etc. So heat is a form of energy which gives us sensation of warm or hotness or coldness, warm or hotness. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे सब किसी को ठीक नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे फोरहेड पे हाथ लगा के देखते हैं अरे हाँ इसको टेम्परेचर है, थोड़ा बुखार है, राइट? मीन्स व्हेन वी जस्ट टच, हम इतना ही बोल सकते कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, बट वी कैनॉट से एग्जैक्टली कि हाउ मच टेम्परेचर इट इज़, हाउ मच हॉटनेस इट इज़, राइट? या फिर दो वेसल लिए, राइट? इन दिस टू वेसल्स, इन वन वेसल देयर इज अ क्यूब्स ऑफ आइस, यहाँ पे आइस क्यूब्स है, एंड देयर इज अ हॉट वाटर. दिस इज हॉट वाटर एंड हियर इज द आइस क्यूब, राइट? सो व्हेन we immerse our hand in the ice cube, what happen exactly? The heat flow from our body to the ice and ice try to melt, right? Now here when we immerse the hand in hot water, we feel water hot because our body temperature is less than this, right? So heat flow from the hot water to our body. So this is what the sensation we feel, right? And when we are feeling this sensation, we can say that contains the amount of heat, or heat is a transit. Heat is actually a transit. Heat is a transit, that we will see the reason behind this, why it is transit. Transit means the heat can transfer from higher temperature to lower temperature. If there is a temperature difference, then there is the transfer of heat takes place. Okay, otherwise if the temperature remains same, then there is no flow of heat. Okay, so we will discuss the heat and temperature in proper way. So what are our daily life example which gives the sensation of hot, okay, and cold, right? So as I told you that the mother feels the temperature of child by touching his forehead, right? और जो डोसा वाला होता है, जो भी पाव भाजी बनाता है, डोसा बनाता है, तो वो क्या करता है, पानी ऐसा ड्रॉपलेट लेता है और वो उस पर स्प्रे कर देता है, जस्ट थ्रो द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द हॉट तवा, right? Why? Because he is testing the hotness of the tawa,
whether it is properly hot or not, right? So that he can cook the dosa better or properly, right? Then we while taking a bath, हम जब नहाते हैं तो पानी जब आता है गीजर से तो ज़्यादा अगर गर्म होगा तो हम पहले चेक करते, पानी में हाथ डालते, जस्ट इमर्स द फिंगर इन द bucket of water whether that water is suitable or not for us, otherwise our skin will burn if it is very hot, especially the while taking a bath for small child, right? Because we have to be very careful because small child skin is very sensitive and soft, so we should not have take a bath with the very hot water for the small child, right? So the then we can say that the whether the body is hot or cold, right? So coldness or hotness of the body that gives the qualitatively, सिर्फ qualitatively हम बता सकते but not in quantity कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, okay, and that can be determined by the temperature only, okay. So let us see, give the title concept of heat, concept of heat, concept of heat. So as I told you that heat is a form of energy which gives a sensation of warmth or coldness, right? So if we touch the piece of ice, we feel cold. If we immerse our hand in the hot water, we feel hot, okay. So or when we stand near the fire, जब हम fire के नीचे खड़े होते हैं तो हमको गर्मी लगता है because the hot waves reaching to our body is cold and the fire is hot, okay. So the heat flow from higher temperature to lower temperature. Now there are two types of theory, that is the caloric theory and dynamic theory. So let us see one by one. Now the next is, as I told you that there are two types of theories, caloric theory and dynamic theory, okay. What is the caloric theory? Heat is an invisible, weightless and odorless fluid, okay, called as calorie, okay. And dynamic theory in which all substances, solid, liquid and gases are made up of molecules, and these molecules are in the state of continuous random motion, okay. Now when the calorie is added in our body become warm or hot, and when the calorie is removed, so our body become the temperature become reduce or temperature falls, okay. But this caloric theory failed to explain the production of heat energy by the friction, and that's why nowadays the dynamic theory is useful, okay. This theory, dynamic theory, depends on the temperature and nature of molecules, right? And because dynamic matlab it is in motion, right? The molecules are vibrating, molecules are moving, right? They may move in a straight line, so it's called as translational. If they are vibrating up and down or about to and fro motion, or they may rotate, right? So let us see all these three type of motion. So first one is the translational, second is vibrational, and the third one is the rotational, okay. So let us see what happen in the translation motion. So translational, as how we study in mechanics, okay. In mechanics we say that the body is moving in a straight line, तो यहाँ पे बॉडी के जगह पे क्या लेना है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, राइट. सो इन विच molecules of a body are moving in straight line, okay, and this is possible in gases, right. Now the second type of motion is vibrational. The molecules are continuously vibrating at any temperature, right. They are vibrating about their mean position, right. So which is to and fro motion of an molecule, okay, and this is possible about their mean position, and which is common in liquid and gases,
common in liquid and gases, which is common in liquid and gases. And third one is rotational motion. We also study rotational motion in mechanics, okay, but now we have to study in heat, right? So rotation of the molecule about their axis, and this occur in at a very high temperature. So rotation of molecules about their axis, about their own axis, and possible at high temperature, okay. Actually, when the substance is heated, what happens exactly? The molecules are vibrating very fast, okay, and when they are vibrating, they possess kinetic energy. So whatever the sum total of kinetic energy, that gives the information about heat, okay. So next is the another definition for heat can be defined as when the substance is heated. So when any substance is heated, what happens? The thermal vibration takes place, thermal vibrations of molecules, and because of thermal vibration they are moving continuously in random motion, so possess kinetic energy, and sum total of kinetic energy of each molecule constituent the heat, okay. Sum total जो है that is the heat, okay, and this energy possessed due to their vibrational and rotational motion of the molecules. Next possible question is the heat is the energy transit. मतलब heat एक जगह पे नहीं रहती, which can transfer from hot body to cold body. Understand? Means always flow, and this heat transfer is possible due to the temperature difference. As long as the temperature difference is there, okay. For example, suppose if we take a two system, right, and these two systems are separated by some walls, a medium. So this is the hot body and this is the cold body, right. So heat will flow from hot body to cold body, and this transfer of heat will continue as long as it become thermal equilibrium. मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है तब तक वो फ्लो होता रहेगा, राइट. So here the energy associated with the configuration and random motion. Configuration, what is its position? That is called configuration, right, of the molecule in a body is called internal energy. And the part of this internal energy that is transferred from one body to another body, but how it is possible? Due to the temperature difference between them is called as heat, okay. That's why heat is a transit energy, and we say that the heat is meaningful only when there is a heat is transferred, okay. If we say heat in a body or heat of a body, right, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, meaningless लगता है, right. So we define heat energy as a transit that flow from one body to another due to temperature difference, okay. Once heat is transferred to a body, it become part of its internal energy, okay. So once heat is transferred, it become part of internal energy. Okay. Now let us see what are the SI unit and CJ unit of heat. Okay.
So we will have the units of heat. Units of heat. It is actually cannot be calculated directly. We have to calculate the amount of heat by using formula. लेकिन जो टेम्परेचर होता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हीट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट नहीं की जाती, राइट. सो एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट is joule, okay, and CGS unit is calorie. CGS unit is calorie. But here there is a relation between calorie and joule. 1 calorie is equal to 4.186 joule. This is what the formula. Okay. थोड़ा सा हीट के बारे में. Now let us see what is the 1 calorie heat. 1 calorie heat क्या होती है? 1 calorie heat is defined as when the 1 gram of water, one temperature of 1 gram of water increases by 1 degree Celsius. So whatever the amount of heat is supplied, that amount of heat is known as 1 calorie heat. बट जो आप बोलोगे कि एकदम 0 डिग्री का पानी ले लो और उसको 0 to 1 लाओ तो जो भी हीट होगी वो 1 कैलोरी, नो ऐसा नहीं है. तो पानी का टेम्परेचर आपको स्पेसिफिक रहेगा एंड दैट टेम्परेचर विल बी 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो आप बोलेगे क्यों कि ये थोड़ा सा आपको इंटरनली इन डिटेल जाना पड़ेगा केमिस्ट्री के में. दैट पार्ट इज पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. So we are concerned with only this temperature. क्यों लिया, क्या लिया, कोई ज़रूरत नहीं, right? So 1 calorie is the amount of heat energy supplied to increase the temperature of water. Temperature of 1 gram of water, क्योंकि CGS है ना, तो 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degree Celsius. That is, we have to increase the temperature by 1 degree Celsius. So what is the amount of heat required? That is called as 1 calorie. If you take 1 kg of water, अगर 1 किलो पानी लिया, right, 1 kg वाटर लिया और उसका 1 डिग्री से बढ़ाना है टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius, then whatever the amount of heat is supplied, that will be 1000 calorie. So which is 1 kilocalorie. So 1 kilocalorie is equal to 1000 calorie, which is equal to 4186 joule of energy. Got it, everyone? So this is what the relation between them. So just take a screenshot. Very important concept, that is the concept of temperature. Okay, we have discussed about the heat. Heat is the sum total of the kinetic energy of each molecule, that is called as the heat, sum total, right? अभी टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर गिव द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. दिस कंसेप्ट वी आर स्टडिंग फ्रॉम स्कूल लेवल ऑल्सो. ग्रेड 8 ग्रेड 9 में भी हम पढ़ के आ रहे हैं. क्लास 10 में भी हमने हीट का लेसन पढ़ा है, तो वी आर मच फैमिलियर विद दिस टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ पे व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, 2 बॉडी लिया मैंने. दिस इज द अनदर बॉडी, राइट? दिस इज हॉट बॉडी एंड दिस इज कोल्ड बॉडी. सो इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट, then there is the flow of heat from hot body to cold body if there is a temperature difference is there only. Okay, as long as the temperature difference is there, there is the flow of heat. Okay, and it will attain the equilibrium condition and it will attain the same temperature throughout the body. Understand? So temperature
determine the direction of flow of heat, ओके जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, जहाँ पे कम है, तो इट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट. एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी of molecules of substance, right, any substance, that is called as average. This word is very important, average kinetic energy. अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब इट इज टेम्परेचर, अगर सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिया तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट. ओके, दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हीट. ओके, सो व्हेन द बॉडी इज हीटेड, its kinetic energy increases, or molecule move faster, and as the molecule move faster their kinetic energy increases, and as the kinetic energy increases its temperature rises. मान लो ठंडा पानी लिया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे वेसल लिया, वेसल में नॉर्मल वाटर लिया, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है. ओके, और मैंने यहाँ पे बंसन बर्नर लगा दिया, राइट. ये ट्राइपॉड स्टैंड है, एंड हियर दी बंसन बर्नर, with the help of Bunsen burner I am supplying the amount of heat. तो क्या होगा यहाँ पे जो भी molecules है, these molecules will move randomly. Okay, they will move very fast and their kinetic energy increases, and as the kinetic energy increases they move faster, so their temperature rises. तो अभी यहाँ पे 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब water will become hot, पानी गर्म होगा, राइट. तो पानी गर्म होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट. सो as the heat is supplied, molecules move faster, and average kinetic energy increases, hence temperature rises, temperature also increases. This is what the concept of temperature. Okay, and this concept of temperature follows from the zeroth law of thermodynamics that we will study later on. जो zeroth law of thermodynamics हम उसको statement लिखने वाले. Okay, now let us see the difference between heat and temperature. So we will write it properly, right, अच्छी तरह उसको लेंगे. Now student, very important concept which can ask frequently in exam, बोर्ड एग्ज़ाम 11 का जो आपका टर्म एंड एग्ज़ाम होगा या फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें जो हमेशा पूछने जाने वाला जो क्वेश्चन होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. ओके, ऑलरेडी यू आर स्टडीड इन स्कूल लेवल ऑल्सो. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर. हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज कॉल्ड एज हीट. व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ये पहला डिफरेंस हो गया. दूसरा क्या है? एक्चुअली ये बेसिक डेफिनेशन है. एक्चुअल डेफिनेशन फॉर हायर क्लासेस क्या होती है कि हीट इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. What are the molecules are present in a body, or these molecules are vibrating about their mean position, right? So when they vibrate, they possess motion, and because of its motion, right, they possess kinetic energy. और सबको मिला के जो भी kinetic energy की, that kinetic energy is nothing but the heat. और temperature क्या है? Temperature is the sum of the average kinetic energy. It is the sum of the or the average kinetic energy of molecule. Represent the average kinetic energy of molecule possessed by a body. That is the temperature. Okay, and ये क्या है? This is the cause. Heat क्या है? It's the cause. Cause क्या मतलब? When the heat is supplied. तो heat, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट हम सप्लाई करते तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो दैट इज द कॉज. ओके, उसका इफेक्ट क्या है? इट इज एन इफेक्ट द टेम्परेचर, राइट. व्हेन द हीट इज सप्लाइड टू बॉडी, कोल्ड बॉडी, सो इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो ये टेम्परेचर क्या होगा? इफेक्ट हो गया. और हीट क्या होगा? जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, दैट इज द कॉज. ओके, then the heat flow from higher temperature to lower temperature. अभी this is very important concept. मान लो यहाँ पे दो कंटेनर दिया है, राइट. टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, राइट. इसका हीट एनर्जी 100 जूल है और इसका 80 जूल है, राइट.
बट दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे कि हीट विल फ्लो फ्रॉम 100 जूल टू 80 जूल्स, तो आंसर इज रॉन्ग। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस देन ओनली देयर इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, अदरवाइज इट विल बी रिमेन एज इट इज। सो देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू lower temperature. That is what happened. Okay, so heat flows from high temperature side to low temperature irrespective of, this is very important, irrespective of amount of heat purchased by the body in contact. यहाँ भी मैंने आपको समझाया, राइट, कि जब तक वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, राइट, इवन दो दे बोथ द बॉडीज purchase the different amount of heat content, right. Then the heat can be measured so the heat measured in the different units, joule, SI unit, calorie, kilocalorie, etc. okay, whereas the temperature measured in 3 different units, और उससे ज़्यादा भी और भी है, रूमर है, ओके, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, पुराना नाम सेंटीग्रेड था अभी सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, डिग्री केल्विन, विच वाज डिस्कवर्ड बाय द लॉर्ड केल्विन, दिस इज गैब्रियल फ़ारेनहाइट एंड दिस इज द अंडर सेल्सियस। तो ये 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना यूनिट डिस्कवर किया है। वी विल डिस्कस दिस यूनिट्स इन डिटेल्स आफ्टरवर्ड्स, हाउ टू मेजर इट, उसको कैलिब्रेट कैसे करते, ये सब हम बाद में देखने वाले। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Hello student, now the next possible question is what is the thermal equilibrium? As we discuss in mechanics, that is the mechanical equilibrium. तो mechanical equilibrium क्या होता है? When the resultant force acting on a body is zero, we can say that the body is said to be in mechanical equilibrium, or body is at rest, or the body is moving with the uniform velocity. वो हमने देखा है। वैसे यहाँ पे thermal equilibrium means कि क्या होता है कि when the two bodies are in contact, चलो एक बॉडी ले लेते हैं, this is hot body, whose temperature is 70 degree Celsius, and another cold body which is which come in contact with this is a cold body having a temperature 50 degree Celsius. Okay, so here the temperature difference is there. As the temperature difference, so there is a flow of heat from high temperature to low temperature, and this transfer of heat will continue till both the body attain same temperature. Okay, so when hot body come in contact with cold body, okay, so heat flow from high temperature to lower temperature, and it will attain same temperature called as thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Okay, this is what the concept of this, right? And at that time the two bodies are said to be in thermal equilibrium. Okay, next possible question is temperature is said to be measure of kinetic energy of the molecule of the body. It's very important. As the temperature increases, the molecule vibrate very fast, molecules vibrate faster than earlier, and because of its vibratory motion it possesses
kinetic energy. And so average kinetic energy, so average kinetic energy increases. And as the average kinetic energy increases, its temperature also increases because the heat is supplied. Okay. So when the heat is supplied, the molecules vibrate faster than earlier. It possesses kinetic energy. So average kinetic energy increases and hence the temperature increases. यहाँ पे आप हीट दे दो. As heat is supplied to the body. Heat is supplied to body. The molecule vibrate faster than earlier. It possesses kinetic energy, and so average kinetic energy increases, and hence the temperature of body also increases. So temperature is the effect, whereas the heat supplied to the body is the cause. Okay. So and this increase in kinetic energy, increase in kinetic energy resulted into internal energy, and as the internal energy increases, the temperature of body also increases, except boiling and melting point. Temperature of body increases except at melting point and boiling point. Melting point and boiling point. ओके. तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है. यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या चेंज ऑफ स्टेट होता है. देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, राइट. सो वॉट एवर द एनर्जी सप्लाइड दैट इज यूज टू कन्वर्ट the change of state from solid to liquid or liquid to gases. That is what the reason behind it. Okay. So greater the kinetic energy, faster the molecules move. Okay. Greater the kinetic energy, faster the molecule move, faster the molecule move, and temperature of body become higher. Temperature of a body become higher, and hence the temperature is said to be measure of kinetic energy of the molecule of the body. Okay. Now the next possible question is, why do solids particle possess potential energy, right? So because they possess potential energy because of the interatomic forces that hold a particle together. Solid में क्या होता है कि जो interatomic spacing होता है. So if we see in solid, interatomic spacing, okay, interatomic spacing is 10⁻⁻10 meter, that is 1 angstrom, and so they exert more force. They have more force of attraction. Okay, more force of attraction or more interatomic force, more interatomic forces that hold the particle together, that holds the particle tightly, and because of this also they got the shape and size for the solid. इसलिए solid को shape and size होता है, and they also possess the potential energy because of their interatomic forces. The key word is here interatomic forces. Next possible question is, what happens when heat is supplied to solid at its melting point? अभी मैंने यहाँ पे बताया कि melting point पे अगर हम heat supply करते हैं तो there is no change of state, no change of temperature, there is no change of temperature, but there is a change of state, solid to liquid, liquid to gases. और उसको उल्टा कर दो, temperature अगर कम किया, right, when the heat is removed from this, then there is a change of state from liquid to solid. Okay, when the heat is removed, then the change of state from gases to liquid state, that is the condensation takes place. Okay, so the temperature of the body remains constant because the whatever the amount of heat supplied or removed, that is used to change the state of a matter, state of a body.
solid to liquid or liquid to gaseous state, and that's why that heat is used. Then the next possible question, why do solids have definite shape and volume? अभी भी बताया मैंने, because of the solid possess a potential energy, right, due to the interatomic spaces, and these interatomic spacing or interatomic forces, they possess the definite shape and volume. Solid possess the definite volume. Okay. Next is, why is density of liquid at melting point nearly same as density of solid at melting point? Density of liquid at melting point or freezing point, we can say that freezing होगा, that is the freezing point. Question थोड़ा wrong हो गया. Okay student, next possible question, this is, why is the density of liquid at freezing point nearly same as density of solid at melting point, right? तो जब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो टू कीप द डेंसिटी कांस्टेंट, अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? एक तो दोनों का जो क्या क्वांटिटी दोनों सेम चेंज होना चाहिए ना, जितना मास चेंज हो उतना वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, या फिर द मास शुड बी कांस्टेंट, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू कीप द डेंसिटी कांस्टेंट, राइट? सो क्या होता है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, राइट, द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मास चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, मास रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? So because of this, the mean distance between the particles during the change of state does not change, right? तो जब change of state होता है solid to liquid, तो जो mean distance होता है वो remains constant होता है, right? And the density depends on mass and volume in turn on mean distance between them. आपको याद होगा एक ग्राफ है वहाँ पे, which graph cannot be draw like this. यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे अगर possible होगा तो ये ग्राफ है, right? तो इस क्या यहाँ पे एनर्जी है, राइट, और यहाँ पे डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो ये ग्राफ ऐसा होता है, एनर्जी डिस्टेंस डायग्राम्स, राइट? तो ये मिनिमम एनर्जी यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम एनर्जी. तो अगर मान लो यहाँ पे है व्हेन इट इज सप्लाइड, राइट, तो इट विल हैव पोजेस दिस मच एनर्जी. तो ये जो मीन डिस्टेंस है, तो ये मीन डिस्टेंस ये हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ state, right? So this is all about the density of liquid remains constant during the freezing point. जब liquid freeze होता है तो मतलब solid में कन्वर्ट होता है, या solid जब melt होता है, right, change of state solid to liquid and liquid to solid state again, तो वहाँ पे density change नहीं होता है. So now next, what happens when the heat is supplied to liquid its freezing points, right? जब heat supply करते हैं freezing point पे तो क्या होगा? melting होगा, right? तो जब भी हम heat supply करते तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, बढ़ती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, राइट, सो इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? सो इफ लिक्विड इज कंटिन्यू टू हीट फर्दर एट द बॉइलिंग पॉइंट, देन द कॉन्स्टेंट ओवरकम इट्स इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो जो फोर्स होता है फोर्स को ओवरकम करता है, बढ़ाता है, एंड दैट्स वाई देयर इज द चेंज ऑफ state from liquid to gaseous state at boiling point, right? And mean distance जो है, that mean distance between the two molecules increases, and so that the particles are further apart. वो दूर जाते हैं particles, और जैसे दूर दूर जा रहे तो उसमें का जो distance है mean distance वो change होता है, and there is a at boiling point the liquid state converted into gaseous state. Okay, आपको मैंने बताया था कि जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होता है सॉलिड में होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, और लिक्विड में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होता है दैट इज 2 एंगस्ट्रॉम, 2 × 10⁻10 मीटर, एंड इन द गैसियस स्टेट में होता है 10 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 × 10⁻10 meter, that is 1 nanometer. This is what the interatomic spacing between the gases, liquid and solid. तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी CET बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है वैल्यूज. ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब सॉलिड,
2 एंगस्ट्रॉम मतलब लिक्विड और 10 एंगस्ट्रॉम मीन्स इट इज द gaseous state. Okay, so let's go on the next question. The next question is, why according to kinetic theory of gases have neither definite volume nor shape? अगर shape और volume नहीं है इसका मतलब वहाँ पे force ही नहीं होगा. अगर मान लो अभी why the solid possess potential energy, why the solid possess the strong intermolecular force so that they can have the definite shape and volume, definite shape and size. तो shape and size रहने के लिए कोई भी हमको बनाना है तो वहाँ पे force of attraction होना जरूरी है. बट एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, आइडियल गैसेस में क्या होता है कि दे डू नॉट हैव द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेज मॉलिक्यूल्स एंड दे रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस. अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अजम्पशन देखोगे या पोस्टुलेट देखोगे पढ़ोगे तो यू विल केम टू नो. 12th में आपको टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, तो यू विल स्टडी ऑल दिस पोस्टुलेट एंड ऑल दिस अजम्पशंस, राइट. व्हाई द गैसेज molecule or gases do not possess the definite shape and size or volume, right. So because of they don't have the molecular force of attraction, तो interatomic forces जो होता है वो वहाँ पे नहीं, absence है, इसलिए it does not possess the definite shape or volume. Okay, down the next is the adiabatic wall and diathermic wall. इसका screenshot ले लो. बैटरी कम होगी शायद. Hello student, next concept is adiabatic wall and diathermic wall. Whenever we are bringing two systems together, these two systems when they are in contact, okay, they become thermally equilibrium, right, and sometimes they do not become thermally equilibrium, right. So let us see what is the diathermic wall. ये दो system लिया मैंने यहाँ पे, right, and this system separated by the wall so that there is no exchange of heat takes place. यहाँ पे कोई heat exchange नहीं होगी. Suppose this system A and system B, right. So to avoid the flow of heat from system A to system B, right, we are using some insulating material, thermally insulating material like wood, plastic और some glass का जो fiber होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, right. आपने कैलोरीमीटर में देखा होगा, तो कैलोरीमेट्री में जो वुलन क्लॉथ वगैरह है दैट एक्ट एज अ थर्मली इंसुलेशन. जो हमारा थर्मास फ्लास्क होता है तो थर्मास फ्लास्क में भी पानी गर्म रहता है, ठंडा रहता है, मतलब वो बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं करने देता है, राइट. सो दैट एक्ट एज अ थर्मली इंसुलेटर. तो हियर द वॉल विच बिहेव्स लाइक थर्मल इंसुलेशन दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक वॉल, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक वॉल विच डू नॉट अलाउ the exchange of heat, वो अलाउड नहीं करता है, right. So that wall is known as adiabatic wall. And another wall in which when the two systems are in contact, system A and system B, right. So to get the transfer of heat from system A to system B, right, we are using some wall, and that wall is a conducting wall or which is a thin copper sheet is used. यहाँ पे thin copper sheet use किया जाता है. And this thin copper sheet act as a conductor or which allow the exchange of heat from one system to another system. That is what the diathermic wall. उसको हम क्या बोलते हैं? Diathermic wall. So this is the not perfect thermal insulator. This is the perfect thermal insulator. Actually practically ये possible नहीं है, but फिर भी हम consider करते हैं कि this is possible practically. Okay. So and this adiabatic wall is represented by the dark thick cross shaded slanting line region, okay, and this diathermic wall represented by thin dark region. thin पतले वाली लाइन होती है उससे वो इंडिकेट किया जाता है. तो देखते हैं डिफरेंस क्या है. An ideal wall or partition separating two systems such that no heat exchange. adiabatic में heat exchange नहीं होता है, can takes place between the two systems is called as adiabatic wall, whereas a diathermic wall, a wall that allows exchange of heat energy between the two systems, is said to be diathermic wall. Second point in the adiabatic wall, it is a perfect thermal insulator, and this is not a perfect thermal insulator. ये नहीं है, okay.
थर्ड पॉइंट, इन द एडियाबैटिक वॉल इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये रियलिटी में अवेलेबल नहीं है. दिस इज exist. Okay, partition like thin sheet of copper act as a diathermic wall, and generally the adiabatic wall represented as thick cross shaded portion or slanting line region, and this diathermic wall represented by thin dark region. So this is the main difference. तो minimum 3 difference आपको लिखना है. This can ask for 3 marks or 2 marks sometimes. अगर 2 मार्क के लिए तो 2 पॉइंट लिखा तो भी चलेगा. अगर TPT is asked for 3 marks, then you have to write minimum 3 points each. Okay, now the next is zeroth law of thermodynamics. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Hello student, next is very important law in thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physics which deals with study of heat and temperature. Okay, in motion, when the heat flows in motion, right? So explain the zeroth law of thermodynamics. First law, second law जो है आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी class 11 में you have to study the zeroth law of thermodynamics. Let us see what is the zeroth law of thermodynamics. Suppose there are 2 system of gases. गैस का 2 सिस्टम है, this system A and another system B. Okay, if A and B are in thermal equilibrium, मतलब क्या होता है कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, right? Suppose if A is in thermal equilibrium with C, अगर A C के साथ thermal equilibrium है, right? If A and B are thermal equilibrium, A and C are thermal equilibrium, then B and C are also in thermal equilibrium. That is what the zeroth law of thermodynamics. Okay, मतलब ये दोनों thermal equilibrium है, ये दोनों equilibrium है, इसका मतलब automatically B and C will be thermally equilibrium. That is the zeroth law of thermodynamics, right? अभी इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? This can be explained. Okay, suppose initially A and B are at a different temperature, right? And they are separated by the adiabatic wall. Adiabatic wall से separate किया गया है. Adiabatic wall. The gases are present in A and B container and they are separated by adiabatic wall. Okay, the another container C gas which is in contact. अभी ये जो wall है ये डायथर्मिक wall है. This is dithermic wall. This is dithermic wall. So what will happen? Because of this, A and C will be thermal equilibrium, right? And as A and C are thermal equilibrium, then B and C will also thermal equilibrium. So as B and C thermal equilibrium, so A and B is automatically thermal equilibrium. Understand? After removing this adiabatic wall, अभी एक बार ये लगा दिया और adiabatic wall निकाल दो, तो you will observe that A and B are in thermal equilibrium. So this is what the zeroth law of thermodynamics. Okay, so if two bodies A and B are in thermal equilibrium and A and C are in thermal equilibrium, then B and C are also in thermal equilibrium. Okay, so for this you have to take the example of this which I have explained just now. Okay, so A and B are separated by the adiabatic wall, right? But A and C are separated by dithermic wall. So there will be the exchange of heat takes place, right? So they will become either there will be flow of heat till they become equilibrium, thermally equilibrium. A and C is thermal equilibrium, C and B thermal equilibrium. After removing this adiabatic wall, you will find that A and B are also in thermally equilibrium. That's all, nothing else. Okay. Next concept जो है, the next concept is thermometry. Thermometry. Let us split this word. Thermo means thermal. Thermo plus metry. Thermo means heat or temperature, measurement of heat. Metry means measurement. So branch of physics which deals with study of measurement of temperature, that is called as thermometry, and the device used to measure the temperature is called as thermometer. Then we know the different type of thermometer, right? Mercury thermometer, alcohol thermometer, right? Resistance thermometer, platinum thermometer, अलग अलग थर्मामीटर है. आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे डिजिटल थर्मामीटर मिलेगा आपको अलग सा. ओके, सो हियर so let's write the thermometry, branch of physics
that deals with measurement of temperature called thermometry, and the device used for measurement of temperature is called thermometer. The thermometer is used by doctor to measure the fever of our body temperature, that is called as clinical thermometer. उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर. और जो लैब में लिक्विड का जो टेम्परेचर मेजर करना है, we call that laboratory thermometer. Okay, now there are different type of thermometer. Now what is the principle of this thermometer, right? So principle of thermometer is the thermometer makes use of some measurable property of substance which changes linearly with temperature, right? कि जो linearly change होता है टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ पे हम लेने वाले mercury as a thermometric liquid or alcohol as a thermometric liquid which can change linearly according to the change in temperature. Okay, so on that principle it is working. तो चलो अभी अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर देखते हैं, उसका रेंज कितना है वो देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या है वो भी देखेंगे, थर्मोमीटर प्रॉपर्टी, और व्हाट थर्मोमेट्रिक लिक्विड और थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस वी आर गोइंग टू यूज, तो उसका एक चार्ट बनाएंगे. सी स्टूडेंट, देयर आर टोटल 8 टाइप ऑफ थर्मोमीटर. पहला जो टाइप ऑफ थर्मोमीटर है दैट इज द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, in which what thermometric liquid is used? Mercury is used as a thermometric liquid. आपने देखा होगा थर्मोमीटर वाइट लाइन होता है ग्लास के अंदर, ओके, ग्लास कैपिलरी ट्यूब उसके अंदर. सो मर्क्यूरी इज यूज एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड एंड इसका जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा? मर्क्यूरी विल एक्सपांड. जितना मर्क्यूरी एक्सपांड होगा उतना वो टेम्परेचर दिखाएगा. सो दैट इज द वॉल्यूम एक्सपांशन. यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपांशन. And we can measure the temperature by using this mercury thermometer from -39 to degrees Celsius to 357 degrees Celsius. Okay, and अगर मान लो मुझे -30, क्यों ये यहाँ पे? क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है. -39 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी. अगर इसके नीचे गया -40 गया तो mercury will become solid. So we can measure the lowest temperature by using mercury thermometer is -39 degree Celsius और maximum 357, क्योंकि ये 357 क्या है? boiling point of mercury. तो within boiling point and freezing point we can measure the temperature of any substance by using a mercury thermometer. अभी आप बोलोगे mercury भी liquid है, पानी भी liquid है, तो पानी क्यों यूज़ किया है? प्रॉपर्टी उसका, पानी जो है water stick to the glass tube whereas mercury does not stick. okay, और mercury क्या है? mercury शाइनिंग सरफेस है, शाइनिंग कलर है, तो उसके अंदर दिखता है, mercury का एक थ्रेड ऐसा दिखता है थर्मोमीटर के अंदर. दैट्स व्हाई mercury इज यूज. मोर और वाटर गेट इवापोरेट, वेपराइज हो जाएगा, राइट, whereas mercury will not vaporize, राइट. तो ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी है mercury का. दैट्स व्हाई द mercury यूज एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड इन द mercury थर्मोमीटर. आफ्टर दैट अगर मान लो मुझे ये टेम्परेचर जो -13 है उसके और लोवेस्ट टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे कि मुझे अंटार्कटिका जाना है, अंटार्कटिका पे -79 -80 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वी कैन नॉट यूज दिस मर्क्यूरी थर्मामीटर. तो व्हाट थर्मामीटर वी यूज? वी कैन यूज अल्कोहल थर्मामीटर, क्योंकि अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट है वो कम है, ओके, -80 डिग्री सेल्सियस. सो सेकेंड टाइप ऑफ थर्मामीटर दैट इज लिक्विड इन ग्लास, but here the thermometric liquid is different. Liquid in glass, instead of mercury we are going to use alcohol as a thermometric liquid, and here also volume expansion जो property है that is that alcohol get expanded, okay, volume expansion.
and the range of this alcohol thermometer is from -80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको देखना है आपका जो अभी कोरोना चालू है, कोविड चालू है, तो मेनी पीपल आर यूजिंग द अल्कोहल सैनिटाइज़र। ओके, तो क्या करो, अल्कोहल सैनिटाइज़र का जो बॉटल है वो बॉटल को ऐसे थोड़ा धूप में रखो, तो आप देखो लेवल दैट अल्कोहल कम्स आउट फ्रॉम द नोजल, नोजल से बाहर आता है। क्यों? बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर में 60 डिग्री भी टेम्परेचर हो गया, 55-50 टेम्परेचर भी हो गया, तो द अल्कोहल गेट एक्सपांड, दैट कन्वर्ट, देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसी स्टेट। तो इसका 60 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल का, एंड लोवेस्ट जो है, लोवेस्ट पॉइंट जो दैट इज -80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -80 को फ्रीज होता है, सॉलिड होता है, वहाँ तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ थर्मामीटर दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ मर्क्यूरी और ये अल्कोहल। आई नीड अ मोर स्पेस हियर। दिस इज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। Okay, so in constant volume gas thermometer we are going to use helium. Helium gas is used. Okay, and here what is the principal thermometer property? That is, the instead of volume it will work on the pressure change. As the pressure changes, pressure change, due to pressure change we can measure the temperature from -270 degree Celsius to -249 degree Celsius. This is what the range for the constant volume gas thermometer. Fourth जो है, that fourth is vapor pressure. Vapor pressure, vapor pressure thermometer. Here the property is again the thermometric liquid is helium or thermometric gas जो भी है substance, and it work on the principle of property is vapor pressure. Temperature range for this -272 degree Celsius to -268, very low. Okay, then the fifth type is resistance thermometer. Resistance thermometer. Here the material is used platinum. Platinum metal is used. Okay, so electrical resistance, work on the property, that is electrical resistance. And with the help of this thermometer we can measure the temperature up to -259 degree Celsius to 960 degree Celsius. This is mostly used in industries. Industry में लगता है उतना temperature. Okay, sixth type of thermometer, that is resistance thermometer. Resistance thermometer, ये भी resistance thermometer है. Okay, in which the carbon is used as a material, as a thermometric substance, in which the principle, the property work on this, that is the electrical resistance. This also work on the electrical resistance. And the temperature range for this resistance thermometer, in which the carbon is used, that is less than -263, less than -263 degree Celsius. We can measure the temperature less than -263. Seventh type of thermometer, that is again resistance thermometer. Resistance thermometer, in which thermistor are used. Thermistor are nothing but the resistance which is based on the temperature. Okay, NTC, PTC, negative temperature coefficient and positive temperature coefficient. As the temperature changes, this property also changes. Okay, this work on the principle of electrical resistance of semiconductor. Electrical resistance, electrical resistance
of semiconductor like germanium, silicon. What is the semiconductor? The material, the substance whose conductivity lies between metal and insulator, or conductor and insulator. That is called as semiconductor. Electrical resistance of semiconductor. Semiconductor. And the temperature range for this resistance thermometer is minus 55 degrees Celsius to 150 degrees Celsius. Okay, and the last type of thermometer, that is digital thermometer, which is used in industries. Okay, here we can measure the highest temperature, maximum temperature and lowest also, right? So which work on the principle of, here the material used thermocouple. Thermocouple means the two wires are provided of different metal, अलग अलग metal का wire use करता है, and it is joined. Okay, and which work on thermo EMF. This you will study in 12th class. Okay, thermocouple and all you will study in class 12. And with the help of this thermometer we can measure the temperature minus 260 degrees Celsius and maximum highest is 1600 degrees Celsius. Okay, so these are the different type of thermometer used for different range. Take a screenshot. See student, next question is, explain how thermal equilibrium is attained between thermometer and patient holding thermometer in mouth. So जो what are the thermometer used by doctor, that is the clinical thermometer. What do you call it? Clinical thermometer. इसका जो रेंज है बहुत कम होता है, it is in Fahrenheit. So approximately if we take 95 Fahrenheit to 110 Fahrenheit, ये रेंज होता है उसका, क्योंकि बियॉन्ड दिस गया तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा और बिलो दिस गया तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा. सो जो लाइव कैपेसिटी आदमी का जो टेम्परेचर चाहिए जो जिंदा रह सकता है, तो वही रेंज यहाँ पे रखा है, राइट. एंड सो इनिशियली द क्लिनिकल थर्मामीटर इट इज लाइक दिस. क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ऐसा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है. इनिशियली क्या करता है, ऐसे झटकता है, शेक करता है क्लिनिकल थर्मामीटर को, ताकि जो भी मर्क्यूरी जो भी एक्सपांड होगा यहाँ पे जो रहेगा वो वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, राइट. सो टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज लोअर देन आवर बॉडी टेम्परेचर. सो व्हेन इट इज इंसर्ट इन द माउथ, ओके, so there is a heat flow from our body to its thermometer, and this flow of heat will continue till the both will have the same temperature. That is thermally equilibrium. And after removing that thermometer from the mouth, so doctor said, oh it is 101 Fahrenheit, 101 फीवर है, ओके, और 102 फीवर है और 104 फीवर है, राइट. तो जब 104 होता है मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, जब 101 होता है तो थोड़ा सा नॉर्मल बुखार रहता है, राइट. 100 है तो कम होता है 100. आवर बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फारेनहाइट, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है फारेनहाइट में, राइट. अगर वो 100 के आसपास गया तो हमको लगता है थोड़ा बुखार है, बॉडी जैसा गर्म जैसा लगता है, राइट. लेकिन वो 104 मतलब वेरी हाई टेम्परेचर. इमीडिएटली यू हैव टू रश टू द डॉक्टर फॉर डायग्नोसिस और फॉर ट्रीटमेंट. ओके, द नेक्स्ट इज हाउ इज द थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड. Okay, explain the procedure for setting up an empirical scale for temperature, right. अभी थर्मोमीटर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं. कोई भी थर्मोमीटर अगर हमको सही है, गलत है, फॉल्टी है या करेक्ट थर्मोमीटर है, उसको कैसे देखा जाए. तो ये जो थर्मोमीटर का ऐसा होता है, दिस इज व्हाट द ट्यूब ऑफ द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर. ओके, थर्मोमीटर है. नाउ यहाँ पे मर्क्यूरी इज फिल्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड. Now initially this thermometer immerse in the ice cube. पहले उसको आइस क्यूब में रखो जहाँ पे आइस क्यूब है. So it will show the freezing point. So mark that point as the lowest point. So let that 0 degree Celsius. Okay. So that is the ice point which you call ice point, where the water freezes. Okay.
उसके बाद उसको गर्म करो, मेक इट हॉट एंड लेट इट बॉयल। तो जब बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके, सो मार्क दैट पॉइंट एज 100 डिग्री सेल्सियस एंड वॉट एवर द रीजन, जस्ट डिवाइड दिस रीजन इंटू 100 पार्ट्स, उसको 100 में डिवाइड करो, 100 डिवीजन। सो ईच डिवीजन विल गिव द वैल्यू फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। जो हर एक डिवीजन होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस बताएगा। अभी आजकल बहुत एक्यूरेसी आ रहा है, तो एक में भी 10-10 छोटे छोटे डिवीजन बना दिए, 0.1 में हम मेजर कर सकते हैं। फॉर मोर एक्यूरेसी वी कैन डिवाइड दिस 1 डिवीजन इंटू अगेन 10 पार्ट्स, तो ईच पार्ट विल गिव द वैल्यू ऑफ 0.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे टेम्परेचर है 50.5, 50.6, ऐसे हम मेजर कर सकते हैं। So this is the perfect way for calibration of thermometer. Fix the upper fixed point and lower fixed point. Upper fixed point is the boiling point of water, pure water, okay, and the lower fixed point, that is the ice point, which is the ice of pure water. आपको यहाँ पे pure water लेना है। आप impure water लेंगे तो maybe you may not get the exact boiling point and exact ice point. Got it? So this is the way, correct way of calibrating any type of thermometer. Okay, मैंने आपको ice point भी बता दिया, steam point भी बता दिया, right? So you will get the water freezes at 0 degree Celsius at a normal atmospheric pressure. जो हमारा normal atmospheric pressure है वो कितना है? Normal atmospheric pressure, okay, that is 1 atmosphere which is equal to 10⁵ Pascal. तो 10⁵ Pascal that is the 1 atmosphere pressure. आप प्रेशर अगर चेंज करोगे तो ये आपका आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज, अंडरस्टैंड? तो आपको पहले वो कंसिडर करना है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जहाँ पे प्योर वाटर फ्रीज होगा, सॉलिड होगा, फिक्स दैट पॉइंट एज अ आइस पॉइंट एंड एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर वेयर द प्योर वाटर गेट बॉइल्स, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ 100 डिग्री सेल्सियस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. Mark these 2 points on the thermometer. Okay, so this is for the Celsius thermometer, right? जब हम Fahrenheit का देखेंगे तो उसका अलग होगा या Kelvin होगा तो अलग होगा. In the next class we will study the different type of thermometer. Thank you. Have a good day. See you. Bye bye.